hypoxia, cyanosis, etc. we have completed. Cyanosis and hypoxia में difference आता है. Cyanosis क्या है? Deficiency of oxygen at the tissue level or in the blood. And the deficiency or the shortage of the oxygen in the tissue is called as hypoxia. ठीक है. And questions आपको मिलेगा कि fetal hemoglobin का ODC right और left है in comparison to the maternal hemoglobin. Question ऐसे ही देता है कि supposed to be a female is in the pregnancy, the two different taste of the hemoglobin has been occurred for the maternal blood and fetal blood. Which of the following has the ODC right and left? ये क्वेश्चन पूछेगा. मायोग्लोबिन मैंने बताया था कि हाइपरबॉलिक होता है, याद है. सार्स का डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म याद रखिए, कोरोना वायरस. ठीक है. नाउ विल कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. Transport of carbon dioxide. Carbon dioxide actually transported in the blood by means of three different ways. Three different ways through which the carbon dioxide is being transported in the blood. Number one, dissolved state. हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 times more soluble than oxygen. याद है? Yes, sir. Means dissolved state में अगर ऑक्सीजन 1 to 3% कैरी होता था, याद है? In the form of dissolved state, the oxygen is carrying in the blood is 1 to 3% only. Maximum oxygen is to be transported by the blood in the form of oxyhemoglobin through the RBC. But as because the solubility of the carbon dioxide is 20 to 25 times more than the oxygen, then the dissolved state में carbon dioxide ज़्यादा carry होगा कि नहीं? And that is approximately dissolved form through the plasma is 7%. The 7% of the carbon dioxide is to be carried in the dissolved form through the plasma. Then second is bicarbonate form में also through the plasma it is carried what na 70%. And number three, कार्बामिनोहेमोग्लोबिन. कार्बामिनोहेमोग्लोबिन फॉर्म में ये आरबीसी के थ्रू कैरी होता है, दैट इज 23%. देखिए 100% मिल गया आपको. सबसे हाईएस्ट किस फॉर्म में कैरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड? बाइकार्बोनेट फॉर्म में थ्रू द प्लाज्मा और थ्रू द आरबीसी. एंड प्लाज्मा के थ्रू और भी 7% कैरी होता है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व. तो आपको पूछेगा कि आरबीसी के थ्रू कितना परसेंटेज कैरी होता है एंड प्लाज्मा के थ्रू 77% थ्रू प्लाज्मा. So through the plasma it is 77%, whereas through the RBC it is only 23%. ठीक है ना? ये क्वेश्चन है. Now, जैसे हम लोग ऑक्सीजन का कैलकुलेट किए थे, याद करिए कि 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, याद है ना, वो पूरा बताया था कि 5 ml of oxygen is transported by the blood in the normal condition, whereas 15 ml of oxygen per 100 ml of blood, the oxygen is transported by the blood during the stainless condition. याद आया? Yes. देखो जितना टिश्यू कंज्यूम करेगा उतना ही ट्रांसपोर्ट होगा एज ए होल, हम बोल सकते हैं, because oxygen will be added in the
alveolar level only that amount which is to be consumed by the tissue or cells. जितना tissue और cell consume करेगा उतना ही add होगा कहाँ पे alveoli में. And tissue कितना consume कर रहा है normal condition में ना 5 ml. तो वो 5 ml का जो gap है उसको कौन fill करेगा alveoli. And tissue consume करता है 15 ml during the strenuous condition, during the stress condition. आप exercise कर रहे हैं, cycling कर रहे हैं, running कर रहे हैं, swimming कर रहे हैं, आप मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाएगा 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड. तो गैप कितना हो गया 20 माइनस 15 है कि नहीं. तो 15 ml का गैप हो गया. तो वो 15 ml कौन भरेगा अल्वियोली. इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में पूरा ब्लड में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है 5 ml एंड ड्यूरिंग द स्टेनस कंडीशन व्हाट इज द अमाउंट ना 15 ml. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैलकुलेशन है. ठीक है. जैसे कि आप बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वेनस ब्लड की आर्टेरियल ब्लड. वेनस ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेनस ब्लड में जो प्रेजेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 52.7 ml मतलब अप्रोक्सीमेटली 53 राइट पर 100 ml blood. It is the amount of carbon dioxide per 100 ml of blood present in the deoxy blood. And deoxygenated blood में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था. अरे डिऑक्सी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 45 था कि नहीं. नाउ अगर हम ऑक्सी की बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आर्टेरियल ब्लड. आर्टेरियल ब्लड में ये हो जाएगा 49 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ब्लड. एंड आर्टेरियल ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था 40 था. याद आया कि नहीं. देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 था तो अमाउंट कितना है ना 52.7 और 53 ml पर 100 ml. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो पार्शियल प्रेशर कम हो गया 40 तो अमाउंट भी कम हो गया 49. तो व्हाट इज द डिफरेंस फॉर 53 49 कितना डिफरेंस हो गया 4. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एट एल्वियोलर लेवल 4 ml पर 100 ml. मतलब इसका ये हो गया कि टिश्यू कितना रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ना 4 ml. जितना टिश्यू रिलीज करेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली के थ्रू बाहर निकल जाएगा. एंड व्हाट इज दैट अमाउंट 4 ml. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड ना 4 ml. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड ना 5 ml. ये 100 ml से हम बात कर रहे हैं तो आप 1 लीटर का कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल बॉडी का ब्लड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. समझ में आया. तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन. बाकी उसके हिसाब से हम लोग अगर जाएंगे एक्सरसाइज कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैरी करेगा कि नहीं. So this is all about the calculated part of the carbon dioxide and oxygen amount to be transported by the blood. अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज में डिस्कशन करेंगे. देखो मैंने पहले ही लिख दिया है कि dissolved form में 7% maximum और majority part of the carbon dioxide to be carried in the form of bicarbonate. And यहाँ पे ही मैं मेंशन कर देता हूँ ये जो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन जो 23% है ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कैरी होता है आरबीसी में हेमोग्लोबिन के साथ कैरी होता है कि नहीं. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हेमोग्लोबिन का 2 पार्ट है हेम एंड ग्लोबिन.
एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कैरी हो रहा है? ग्लूबिन पार्ट। आप लोग थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल चैप्टर याद करिए। ग्लूबिन इज ए प्रोटीन एंड प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप था कि नहीं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बाइंड कर रहा है? एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड ऑफ ग्लूबिन प्रोटीन to form the compound called as carbaminohemoglobin. आप समझे? Yes, sir. Here the carbon dioxide binds the amino group of amino acid of globin protein. ये चीज याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड 23% आरबीसी में किसके साथ बाइंड करके वो ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बाकी बचा कौन सा? 7% हो गया, 23% हो गया, बचा कौन सा? 70। स्टार्ट करें तो ये 70% कैसे कैरी हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू, वो स्टार्ट करें। ये लिख लिया आप लोग? मैं पहले कर लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पहले बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को करने में इजी होगा डायग्राम। दिस इज द एल्वेओलर लेवल, दिस इज द टिश्यू लेवल। ये है ब्लड वेसल, उसके अंदर ये हो गया आरबीसी। तो आरबीसी के बाहर जो पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है थ्रू प्लाज्मा। I will show you कि how the 70% of the carbon dioxide carried to the plasma in the form of bicarbonate. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होगा, थोड़ा बड़ा करके डायग्राम्स करिएगा। ठीक है, जो आरबीसी का साइज करेंगे थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि इसके अंदर पूरा रिएक्शन मैं आपको बताऊं। स्टार्ट करिए। This is the blood vessel. This is the plasma. This is the RBC. आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं डोनाल्स मेम्ब्रेन। व्हाट इज द पीएच ऑफ द प्लाज्मा? प्लाज्मा का पीएच क्या है? तो ब्लड का पीएच या जो है प्लाज्मा का पीएच भी वही है। व्हाट इज 7.4।
Slightly alkaline है कि slightly acidic है? Slightly alkaline. The pH of plasma, right? ये सब छोटा छोटा चीज हम लोग को गौर से देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. स्टार्ट. मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. टिश्यू से स्टार्ट करता हूँ मैं, एंड करूंगा कहाँ पे ना, एल्वियोली में. ठीक है. टिश्यू क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और दैट इज ऑक्सीजन. टिश्यू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ गया? प्लाज्मा में आया कि नहीं? मतलब ब्लड में आ गया. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, लुक एवरीबॉडी, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एंटर इनटू व्हाट? आरबीसी. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड in presence of what na water, in presence of the enzyme carbonic anhydrase, याद होगा, that will be converted into what na H2CO3, that is what na carbonic acid. करेक्ट है. हम लोग पढ़े कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का सोर्स क्या है? आरबीसी. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर एंट्री करता है. इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू H2CO3 एंड दिस कार्बोनिक एसिड नाउ दैट विल बी डिसोसिएट. ये डिसोसिएट हो जाएगा into what na HCO3 minus and H plus. हो गया. Now this bicarbonate ion, बाइकार्बोनेट को नीचे लिखते हैं. Now this bicarbonate ion comes out. बाइकार्बोनेट अभी कहाँ पे आ गया? प्लाज्मा में आया कि आरबीसी में आया? प्लाज्मा में आ गया. Now this HCO3 minus in combination with what Na plus, किसके साथ कंबाइन करेगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्लाज्मा में सोडियम आयंस वगैरह प्रेजेंट है, and that will be converted into what Na NaHCO3. किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट. कितना परसेंटेज यहाँ पे कैरी हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 70%. So 70% of the carbon dioxide is to be carried through the plasma in the form of which bicarbonate? Sodium bicarbonate. ये ट्रैवल किया कहाँ पे? ट्रैवल किया कहाँ तक? ट्रैवल किया थ्रू द ब्लड, थ्रू द ब्लड टू alveoli और लंग्स के टू टिश्यू. alveoli हुआ कि नहीं? टू लंग्स. तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड है? ठीक है ना. जैसे ही वो कहां पे रीच करेगा? alveoli लेवल में. ये चेंज हो गया. मैं लेट मी फर्स्ट फिनिश देन आफ्टर वी विल डू दिस. ये जैसे ही ये alveoli लेवल में रीच करेगा तो अगेन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट ना Na+ एंड HCO3 माइनस. अब कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि जैसे ये बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा, जैसे ये आरबीसी से बाइकार्बोनेट बाहर निकला, मैं तो एक आरबीसी का दिखा रहा हूं. एक आरबीसी के अंदर हमको पढ़े थे कि सम मिलियंस नंबर ऑफ व्हाट ना दैट इज हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. आप सोचिए एक आरबीसी के अंदर ये जो बाइकार्बोनेट है, multi millions number of bicarbonate ions will be released into the plasma. तो प्लाज्मा का जो pH है 7.4 वो चेंज हो जाएगा कि नहीं? pH उसका इंक्रीज कर जाएगा, मोर अल्कलाइन हो जाएगा. तो उस pH को मेंटेन करना जरूरी है. So as to maintain the pH of the blood at tissue level. क्योंकि हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं? टिश्यू लेवल में क्या alveoli लेवल में? टिश्यू लेवल में. So as to maintain the pH of the blood plasma in the tissue level, the same quantity of chloride ion will comes in. जितना बाइकार्बोनेट बाहर आया उतना क्लोराइड आयन क्या हुआ? अंदर आ गया. फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी. बाइकार्बोनेट का मूवमेंट क्या है? फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा. म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ कि नहीं? So as to maintain what the electroneutrality or the pH of the blood plasma, the same quantity of chloride ion will comes in. This is called as what? Na. This exchange between the chloride ion and bicarbonate ion in between the RBC and plasma is called as chloride shift. Chloride shift is also called as what?
क्लोराइड शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड एज हैमबर्गर फिनोमेनन और हैमबर्गर इफेक्ट। तो हैमबर्गर इफेक्ट कहां पे होता है, टिश्यू लेवल में कि एल्वियोलर लेवल में? आपको याद क्या रखना है, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर इफेक्ट में बाइकार्बोनेट फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, whereas chloride is from plasma to आरबीसी। तो ये जो क्लोराइड आ गया ना, अब ये क्लोराइड के साथ ये जो H प्लस है ये कंबाइंड हो जाएगा, सॉरी क्लोराइड के साथ ये कंबाइंड करेगा कौन ना, दैट इज पोटेशियम आयन टू फॉर्म व्हाट, KCl। मैं अभी कंप्लीट नहीं किया, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, आपका फोकस पूरा रहना चाहिए। 1% भी एक इधर उधर हो जाएगा तो मुझे दोबारा मत बोलो, आई विल नॉट हेल्प यू एनी मोर। इसलिए मैं पहले बोला हूं आप लोग लिखिए मत, ये समझाने के टाइम में लिखिएगा। तो देखिए ये जो ब्लड आ रहा है इसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सी ब्लड की डीऑक्सी ब्लड? The blood which is coming from the alveoli to tissue is called as what ना, ऑक्सी ब्लड। तो ऑक्सी ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सी ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, जो आरबीसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू पास कर रहा है टू द टिश्यू, दैट कंटेन्स व्हाट, HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, क्या होगा? सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा HbO2, राइट। अब मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था कि हेमोग्लोबिन का एफिनिटी टुवर्ड्स H प्लस इज मोर और टुवर्ड्स O2 इज मोर, H प्लस इज मोर, टुवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, लेस टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज लिस्ट। नाउ आई टोल्ड यू फैक्टर्स अफेक्टिंग ODC राइटर। अगर H प्लस आयन इंक्रीज करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करता है, then hemoglobin will dissociate oxygen और hemoglobin will bind with oxygen। अब देखिए hemoglobin के साथ ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ है, called as oxyhemoglobin। तो यहाँ पे देखिए H प्लस आयन इंक्रीज किया कि नहीं, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, किस लेवल में, टिश्यू लेवल में। सो एज द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, एज द H प्लस आयन इज इंक्रीजिंग, the hemoglobin affinity will towards H plus and CO2 will increase and towards oxygen will decrease। अब क्या करेगा ना, जैसे ही ये H प्लस आयन के साथ कंबाइंड करेगा तो दे विल रिलीज द ऑक्सीजन एंड दे विल बाइंड विद द H प्लस आयन टू फॉर्म HHB। क्या हो गया, क्या हो गया, ये ऑक्सीजन को वो रिलीज कर दिया कि नहीं, या ऑक्सीजन को बाइंड किया, मतलब डिसोसिएशन की एसोसिएशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज हेमोग्लोबिनिक एसिड। This is called as hemoglobinic acid। HHB का फुल मतलब पूरा नाम क्या है, हेमोग्लोबिनिक एसिड। तो हेमोग्लोबिनिक एसिड फॉर्मेशन हुआ कि दैट इज रिलीज हुआ और दैट इज डिक्रीज किया तो टिश्यू लेवल ना इंक्रीज किया, हेमोग्लोबिनिक एसिड इंक्रीज किया एंड ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हुआ कि नहीं, एंड दिस ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल टू। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ एक चीज बोला था कि आपके बॉडी के लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी है उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। अब आप सोचिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन यहाँ पे सेपरेट होता, एंड अगर ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होता तो इज इट अवेलेबल टू द टिश्यू? सो टिश्यू विल गेट द ऑक्सीजन only when the carbon dioxide and H plus ion will increase in the tissue, and that is the reason why the tissue is releasing the carbon dioxide, and that carbon dioxide ultimately will form the H plus ion, which leads to the separation of the oxygen from the oxyhemoglobin to available for the tissue। इसीलिए अगर आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, H प्लस आयन कम हो जाएगा, तो सेपरेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल इज आल्सो डिक्रीज्ड। इसीलिए मैंने आपको बताया था हाइपर वेंटिलेशन, जो डीप ब्रीथिंग होता है, तो डीप ब्रीथिंग में क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द बॉडी सो दैट द ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल टू द टिश्यू। समझ में आया, क्लियर है? अब हम लोग फिर से कहां पे आते हैं ना, एल्वियोलर लेवल में। Na+ एंड SCO3 ये सेपरेट हो गया कि नहीं,
नाउ दिस HCO3, जैसे कि HCO3 यहाँ पे एंट्री किया, जैसे ही HCO3 आरबीसी के अंदर फिर से एंट्री करेगा, सेम क्वांटिटी तो हम लोग पढ़े थे क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन फिर से बाहर आ जाएगा कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट के रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। And reverse chloride shift occurs in the tissue level की alveoli level? क्लियर है? नाउ alveolar लेवल में हो क्या रहा है देखिए, alveolar लेवल में यहाँ पे O2 एंट्री कर रहा है कि O2 एग्जिट कर रहा है? O2 एंट्री कर रहा है। ये जो बाइकार्बोनेट है, ये जो बाइकार्बोनेट है, अब ये बाइकार्बोनेट किसके साथ कंबाइन करेगा ना, H प्लस के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म व्हाट? H2CO3, and H2CO3 that will be converted into what? Now that is carbon dioxide plus water in presence of what? Now that is carbonic anhydrous, क्योंकि carbonic anhydrous reversible reaction control करता है, ये reversible है। Now this carbon dioxide will be released out, ऑक्सीजन ऐड हुआ, और जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इस आरबीसी के पास क्या प्रेजेंट है? अभी इस आरबीसी के पास क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिनिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वहां पे टिश्यू लेवल पे हेमोग्लोबिनिक एसिड फॉर्म हुआ था, जब ये रिटर्न किया टू द एल्वियोली तो उसमें तो हेमोग्लोबिनिक एसिड है ना, HHB, HHB प्लस O2। अब यहाँ पे खेल अलग हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज्ड है कि डिक्रीज्ड है? इंक्रीज्ड है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर इंक्रीज्ड है, अगर इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in presence of oxygen, increased partial pressure, hemoglobin will bind with more oxygen or will dissociate the oxygen? हम लोग पढ़े थे hemoglobin binding with oxygen primarily responsible for और primarily that is controlled by the oxygen partial pressure। अगर आपके बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा तो हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग भी इंक्रीज करेगा। तो टिश्यू अल्वियोली लेवल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज किया तो हेमोग्लोबिन का एफिनिटी O2 के तरफ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? अगर इंक्रीज करेगा तो ये O2 को बाइंड करेगा एंड H प्लस को सेपरेट कर देगा कि नहीं? नाउ दैट विल बी फॉर HbO2 एंड H प्लस सेपरेट, एंड यही H प्लस किसको अवेलेबल हुआ? समझे कि नहीं? That H plus is available for the combined with the bicarbonate to form the carbonic acid to convert it into CO2 H2O and CO2 रिलीज हो गया। बात को समझेगी नहीं? yes. ऐसे प्रोसेस चलता है हमारे बॉडी में, टिश्यू लेवल में, एल्वियोली लेवल में। फिर ये देखो, ये फिर से ऑक्सीडेटेड बन गया HbO2, तो फिर चला कहां पे? टिश्यू में। फिर जाके वहां पे H प्लस के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस को बाइंड कर लेगा, प्रोसेस विल कंटिन्यू। इसीलिए मैंने बोला था आप समझाने के टाइम में आप अगर लिखेंगे तो फिर लिखने के टाइम में बाकी तो लिख रहे होंगे, जो लिख के बैठा होगा वो ऐसे ही देखेगा सब। कंटिन्यू करिए, 2 मिनट्स आपके पास है। दो मिनट के अंदर कंप्लीट करिए।
इसीलिए pH हमेशा कांस्टेंट रहता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बर्गर एंड रिवर्स क्लोराइड। एल्वियोली लेवल में भी ब्लड का pH 7.4 रहेगा, टिश्यू लेवल में भी 7.4 रहेगा, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है। Completed? Yes. So here, coming to the next. Finished? Yes, sir. Bose effect and Halden effect. पहले डायग्राम को और एक बार देखिए, तभी जाके बोर्स इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट आपको समझ में आएगा। आई एम टेलिंग अबाउट द बोर्स इफेक्ट। Hemoglobin, just see at the tissue level, right? See at the tissue level. Hemoglobin affinity towards oxygen being affected due to H plus and CO2. Yes or no? Affinity of hemoglobin towards oxygen is to be changed because of the presence of H plus and CO2, and that results into the dissociation of oxygen from hemoglobin, which is available to the tissue. Is called as what ना Bose effect. Means क्या है? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा कि कम रिलीज होगा? More carbon dioxide and H plus ion will be released at the tissue level. So more carbon dioxide, more H plus ion means more carbon oxygen will be separated from hemoglobin. Yes or no? And that more oxygen will be available to the tissue. कहानी समझ में आ रहा है? आपकी बॉडी में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन कैसे आ जाता है?
कैसे आपको टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, H+ इंक्रीज करेगा, तो डिसोसिएशन ऑफ द हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन विल बी मोर ऑकर। मतलब राइट टर्न हुआ कि लेफ्ट टर्न हुआ? ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो राइट टर्न कहां पे होता है? टिश्यू लेवल में। लेकिन लेफ्ट टर्न कहां पे होता है? एल्वियोली लेवल में। बाइंडिंग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेफ्ट, डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन राइट। तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन कहां पे हो रहा है? टिश्यू में। बाइंडिंग कहां पे हो रहा है? इसीलिए राइट ओडीसी कहां पे होता है? टिश्यू में। लेफ्ट ओडीसी कहां पे होता है? एल्वियोली। ये सब समझेंगे नहीं तो कैसे होगा? मजाक समझ के रखे हो क्या? फिजियोलॉजी है, दिमाग में घुसा अभी धीरे धीरे। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ना? बोर्स इफेक्ट। पूरा रिवर्स आ जाते हैं। व्हाट इज हाल्डेन इफेक्ट? सी आर द एल्वियोली लेवल। एल्वियोली लेवल में देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? एल्वियोली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, तो हेमोग्लोबिन के एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। सो दैट द H+ will be separate and that H+ will be bind with the SO3- to form the carbonic acid, and that ultimately release the carbon dioxide which will be, that is what not drain out through the alveoli. This is called as Halden effect. तो बोर्स इफेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करता है, हाल्डेन इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. Bohr's effect occurs in the tissue level and separation of oxygen, whereas Halden effect occurs at the alveoli level and separation of carbon dioxide. Opposite है कि नहीं? Right one. कार्बन डाइऑक्साइड और H+ add affecting the affinity carbon dioxide H+ affecting the affinity of hemoglobin towards oxygen. It explain transport of oxygen and separation of oxygen at tissue level. इसका पूरा रिवर्स जो है हाल्डेन इफेक्ट. यहाँ पे कौन अफेक्ट कर रहा है? हाल्डेन इफेक्ट में ऑक्सीजन इज अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ add. So oxygen affecting the affinity of hemoglobin for H+ or carbon dioxide. And it explain the transport of carbon dioxide and separation of carbon dioxide at alveoli level. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बोर्स इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट के वजह से ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है एंड सेपरेट होता है. एंड दैट इज व्हाई अगर आपका ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज किया, H+ आयन ज्यादा इंक्रीज किया, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा सेपरेट होगा. एंड मोर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन मींस मोर राइट. मोर राइट है कि नहीं? एंड अगर ऑक्सीजन ज्यादा इंक्रीज किया एट द एल्वियोली लेवल, तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द, that is what not through the alveoli, then it is called as what? Now that is Halden effect. तो ये हाल्डेन इफेक्ट एंड बोर्स इफेक्ट की वजह से ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है एंड सेपरेट होता है. किसी को कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू
some of the few topics like here blue baby syndrome. ये कंप्लीट हो गया? नेक्स्ट पेज में मूव करें? So I'm moving to the next page. Blue baby syndrome. Blue color appearance of skin and mucous membrane of baby due to cyanosis. अब प्रीवियस क्लास में मैंने cyanosis बोला था. Cyanosis का मतलब क्या है ना? Deficiency of oxygen in the blood is called as cyanosis. अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आपका थोड़ा सा स्लाइटली ब्लूइश कलर दिखेगा कि नहीं? And that is called as what? Now blue baby syndrome. Now the point is what is the cause behind the blue baby syndrome? ठीक है? What is the cause behind the blue baby syndrome? The main cause is, मैं एक ही cause लिखूंगा, वही क्वेश्चन में ज्यादातर आता है. Main cause is due to methanohemoglobin. So methanohemoglobin, that is the main cause behind the blue baby syndrome. And what is this methanohemoglobin? मैं आपको ये भी explain कर देता हूँ. तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन है. नॉर्मल हेमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट है वो Fe2+ का फॉर्म होता है. एंड Fe2+ will bind to oxygen and to carry the oxygen in the blood. लेकिन ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा ना? चेंज इनटू मेट हेमोग्लोबिन. चेंज होगी किसमें हो जाएगा? मेट हेमोग्लोबिन. तो मेट हेमोग्लोबिन में आयरन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? फेरस या फेरिक? फेरिक फॉर्म में. एंड फेरिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ विल नॉट एबल टू बाइंड ऑक्सीजन. तो अगर ये हेमोग्लोबिन मेट हेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू व्हाट? ना ड्यू टू that is what? That type of your poisoning or type of your, that is what na, nitrate pollution. तो ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट का कंटेंट ज्यादा रहेगा ना, तो ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? मेथनोहेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा. एज बिकॉज दैट विल चेंज द फेरस इनटू फेरिक. And once the hemoglobin ferrous change into ferric, now it is called methanohemoglobin, and methanohemoglobin will lose the property to bind with oxygen. तो इसमें क्या होगा ना? ब्लड में ऑक्सीजन का बाइंडिंग और प्रेजेंस कम होगा कि ज्यादा होगा कि नॉर्मल होगा? कम हो जाएगा. And that is called as cyanosis. Clear है? Mostly babies में. और भी बहुत सारे कॉज है. आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे कि किसी किसी के केसेस में दो वेंट्रिकल के बीच में, दो ऑरिकल के बीच में क्या होता है ना? ओपनिंग रह जाता है. पढ़े हो? इन बिटवीन टू ऑरिकल कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इन बिटवीन द वेंट्रिकल कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. प्रेजेंट तो नॉर्मल होता है, लेकिन इस सेप्टम में अगर होल हो गया, एपर्चर हो गया, called as interauricular aperture, interventricular aperture और foramen, उससे क्या होगा ना? ब्लड मिक्स होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड इज कंसर्न विद ऑक्सी ब्लड एंड राइट साइड इज कंसर्न विद डीऑक्सी ब्लड. अगर होल हो गया, एपर्चर हो गया, तो ब्लड मिक्स होगा कि नहीं? अगर ब्लड मिक्स हो गया तो ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा.
That is also one of the cause behind what? Nurse blue baby syndrome. तो main cause मैंने आपको ये बता दिया. Complete. Next few technical words. Anoxia means anoxia मतलब क्या है? Deficiency of oxygen और deficiency of carbon dioxide और क्या होगा? Absence of oxygen. A मतलब absence. In inspired air, in oxy blood, called as what? Na anoxia. Hypercapnia. Hypercapnia मतलब हाइपर मतलब इंक्रीज की डिक्रीज्ड? इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, देन दिस इज कॉल्ड एज हाइपरकैप्निया. एंड ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम होगा, देन इट इज कॉल्ड एज एनोक्सिया. तो दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे तो पर्सन विल फील व्हाट? ना सेंसलेस. रहेगी नहीं. ऑक्सीजन एक तो कम हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है, तो धीरे धीरे फेंट हो जाएगा. दैट विल बी फेल डाउन एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ना एस्फैक्सिया. Asphyxia is a combination of anoxia and hypercapnia. नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूपनिया. यू मतलब क्या है? ट्रू. पढ़े हो कि नहीं? यू सिलम. यू का मतलब क्या है? ट्रू मतलब नॉर्मल और ट्रू ब्रीदिंग. नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? ना यूपनिया. एंड नॉर्मल ब्रीदिंग कितना था? What is the rate of normal breathing? 12 to 16 per minute. Now, hypopnea, hyperpnea, मतलब बोल सकते हैं ना? हाइपोपनिया मतलब क्या हो गया? स्लो ब्रीथिंग. एंड फास्टर ब्रीथिंग हाइपरपनिया. Slow breathing during the rest condition and faster breathing during the strenuous condition or exercise conditions. Then apnea. Apnea मतलब no breathing during the death. Okay. तो डेथ के बाद apnea मतलब absence of breathing, no breathing. नेक्स्ट इज dyspnea. dyspnea मतलब पेनफुल. कोई दिक्कत है? डिफिकल्ट होगा. डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगा, आपको ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं फील होगा, थोड़ा सा चेस्ट पेन होगा ब्रीदिंग करने के टाइम में. दैट इज कॉल्ड एज डिफिकल्ट और पेनफुल ब्रीदिंग. एक्चुअली डिफिकल्ट ब्रीदिंग अलग है, पेनफुल ब्रीदिंग अलग है. डिस्पनिया को हम लोग पेनफुल ब्रीदिंग, पेन फील होगा चेस्ट में. डिफिकल्ट ब्रीदिंग मतलब नॉट कंफर्टेबल ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोपनिया. तो जरूरत नहीं है खाली डिस्पनिया डिस्पनिया लिखिए. दैट इज पेनफुल ब्रीदिंग. समझ में आ गया? So now we are coming to
Regulation of respiration. Regulation of respiration. We have two different type of regulations are there. देखिए इसका मैं मतलब पहले समझा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लीजिए पहले। जैसे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि बा थोड़ा सा फिजिकली लेवल स्टार्ट करते हैं तो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो स्पीड हो जाता है, फास्टर ब्रीदिंग हो जाता है, मतलब हाइपर। एंड जैसे हम लोग फिर रेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिकली वो स्लो डाउन हो जाता है। इंस्पिरेशन 2 सेकेंड, देन इट इज फॉलोड बाय एक्सपिरेशन 3 सेकेंड। मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अल्टरनेट चलता है कि नहीं, कॉल्ड एज रिदम, कॉल्ड एज व्हाट, रिदम, रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। कभी फास्टर है कभी स्लो है। अगर ब्रीदिंग फास्टर हो गया, अगर ब्रीदिंग फास्टर हो गया तो ड्यूरेशन क्या होगा ना, कम हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मली 5 सेकेंड होता है इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, दैट गिव्स राइज टू 12 to 13 टाइम्स पर मिनट। अगर ये 20 to 25 टाइम्स पर मिनट हो गया तो टाइम क्या होगा ना, डिक्रीज कर जाएगा। अगर स्लो रेट ऑफ ब्रीदिंग हुआ तो टाइम क्या होगा ना, इंक्रीज कर जाएगा। ये सब डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितना है। हु कंट्रोल एवरीथिंग मींस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एंड यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दो टाइप का है, एक है नर्वस रेगुलेशन, एक है केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन मींस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम एंड केमिकल रेगुलेशन मींस इट इज related with the chemicals present in your blood. मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाना चाहता हूँ इस चीज को क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों के दिमाग में नॉर्मली ये घुसता नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। थोड़ा सा मैं आइडिया कर दूंगा। Supposed to be your body has increased carbon dioxide and increased H plus ion. ब्रीदिंग रेट फास्टर होगा कि स्लो होगा, समझ में आ रहा है ना? Why so? Because the carbon dioxide increased in the tissue level, H plus ion increasing in the tissue level means the tissue is releasing more carbon dioxide, more H plus ion means the body is needing more oxygen. रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, फास्टर। H plus ion CO2 कम हो जाएगा तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाएगा ना, स्लो होगा। मींस यहाँ पे कौन सा केमिकल डिसाइड किया कि रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होगा कि स्लो होगा? CO2 H plus। एनसीईआरटी का एक स्ट्रेट टू द पॉइंट लाइन है, कि ऑक्सीजन और O2 has no significant role in the regulation of respiration. रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन किया, विच केमिकल? CO2 H plus। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, no significant role of the oxygen in the regulation of respiration. It is only carbon dioxide and H plus ion. And which brain center or part of your brain control the regulation of respiration? ना मेडुला ऑब्लांगेटा। एंड इसीलिए मेडुला ऑब्लांगेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सो प्लीज राइट एवरीवन। फर्स्ट हम लोग आते हैं नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन के अंडर पहला हम लोग आते हैं मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर।
medullary respiratory center or respiratory rhythm center. So it is located in what? Located in medulla oblongata. And medulla oblongata is a part of midbrain, hindbrain, forebrain. Hindbrain. It can cause either inspiration or expiration. It can cause either inspiration or expiration. According to the neurons activated. Because actually the brain is made up of what? Millions of neurons. Likewise, the medulla oblongata is also made up of collection of neurons. है कि नहीं? And neurons, कौन सा neuron activated हुआ? That will decide whether the inspiration will or expiration will cause. अगर neuron associated with the inspiration has been activated, then it calls the inspiration. If the neurons will that is controlling the expiration will activate, it will cause what? Expiration. तो ये alternate होता है rhythm. इसको control कौन करेगा? Medulla. And that is the reason why thereby regulate the respiratory rhythm thereby regulate the respiratory rhythm according to the need of body. According to the need of the body. मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा समझ में आ गया? कंप्लीट है क्या? नंबर 2 नेमोटैक्सिक सेंटर और पॉन्स रेगुलेटरी सेंटर. Pneumotactic center or pons regulatory center. Indicate क्या कर रहा है? It is located in pons. Pons. Pons is a part of also what? Hindbrain. It moderate the function of respiratory rhythm center. Moderate का मतलब क्या है? डिक्रीज करना कि इंक्रीज करना? डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? ये मॉडरेट करता है मतलब नॉर्मलाइज करता है. ये नॉर्मल कर देता है. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन को ये मॉडरेट करता है, नॉर्मल करता है. सो ये रिड्यूस करेगा इंस्पिरेशन का या इंक्रीज करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन? क्या करेगा? डिक्रीज करेगा कि नहीं? सो इट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. तो भैया अगर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन को ये डिक्रीज करेगा तो एक्सपीरिएशन स्टार्ट होगा. बोलिए भाई, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन को अगर डिक्रीज कर दिया तो एक्सपीरिएशन स्टार्ट होगा. तो ये अल्टर कर रहा है कि नहीं? Who alter the rate of respiration? Pons. Who maintain the rhythm of respiration? कहानी समझ में आ गया? So it reduce the duration of inspiration
and so cause by expiration. As it reduces the duration of inspiration and thereby alter the respiration rate. यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. Alter the rate of respiration. एनसीईआरटी का एक पूरा स्ट्रेट लाइन है. राइट दैट सेंटेंस. सबका हो गया कंप्लीट. स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी का लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. A strong signal from pneumotaxic area. A strong signal from pneumotaxic area result in shallow SHALLOW and fast breathing. By shortening the duration of inspiration. By shortening the duration of inspiration. समझ में आया कि नहीं? देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं. सैलो मतलब क्या है? सैलो मतलब कम है कि ज्यादा है? कम है. अगर हम लोग ब्रीदिंग और इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, सैलो कर देते हैं, तो ड्यूरेशन कम हो गया. ड्यूरेशन कम हो गया तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एंड दैट इज बाय फास्ट. क्या लिखे हम लोग? सैलो एंड फास्ट द रेट ऑफ ब्रीदिंग. तो ये रेट ऑफ ब्रीदिंग को अल्टर कर रहा है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है यहाँ से. बहुत ज्यादा डिटेल्स बाहर से बिल्कुल नहीं जाना है. Next we are coming to chemical regulation. This is all about partner nervous regulation, capital A. Coming to the number 2, chemical regulation. Chemosensitive area. What is the meaning of chemosensitive area? The area which is sensitive to chemicals. So chemosensitive area or center located chemosensitive area or center located in medulla and pons. Sensitive to कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन. इसीलिए मैंने बोला ऑक्सीजन का कोई केमोसेंसिटिव एरिया है ही नहीं. Because the chemosensitive area is sensitive to only these two chemicals. Chemosensitive area gets activated due to increase in H+ ion and CO2 concentration, which in turn
activate the respiratory rhythm center. For altering the rate of respiration. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सेंटेंस पे एनसीईआरटी का लाइन है पूरा मैंने लिख दिया कि chemosensitive area which is present in the pons valuoli and medulla oblongata are sensitive to carbon dioxide and H plus ions will be activated when the carbon dioxide and H plus ion will increase at the tissue level or at the alveoli level. Tissue level में carbon dioxide increase किया, H plus ion increase किया, and that chemical will be get sensitized the sensitive center present in the medulla and pons. तो जैसे ही मेडुला एंड पॉन्स ये केमिकल को रिसीव करेगा, सेंसिटाइज होगा, दैट विल व्हाट एक्टिवेट व्हाट respiratory rhythm center present in the medulla, and respiratory rhythm center present in the medulla oblongata will what now leads to the rate of respiration will what ना alter. तो हम लोग पढ़े हैं कि रिदम सेंटर को कंट्रोल कौन कर रहा है? निमोटैक्सिक सेंटर. निमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे है? पॉन्स में. And pons are sensitive to which chemical? CO2 and H plus ion. तो CO2 H plus ion जैसे ही केमोसेंसिटिव एरिया से निमोटैक्सिक सेंटर में रीच करेगा तो निमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? तुरंत एक्टिवेटेड हो जाएगा and they will send the signal to respiratory rhythm center. And respiratory rhythm center क्या करेगा ना? अल्टर करेगा रेस्पिरेशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज and H plus ion increase. So increase CO2 and H plus ion will faster the rate of respiration or decrease the rate of respiration? So that will increase the rate and depth of respiration. And this is vice versa. Carbon dioxide ने H plus ion increase किया, the rate and depth of the respiration will increase, and the carbon dioxide and H plus ion decrease in the blood will the rate and depth of the respiration will also decreased. Clear है? Now the next थोड़ा सा और additional point हम बोलते हैं. तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया कि केमोसेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट है? केमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है ना? मेडुला एंड पॉन्स. In addition to that, chemosensitive area also present in aortic arch. aortic arch किसी को पता है? And carotid artery. कौन बोलेगा aortic arch क्या है? aorta से तो हाँ, ये है aorta. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है. This is ascending aorta, this is descending aorta. इन दोनों के बीच में एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? Is called as what? Aortic arch. क्लियर है? तो aortic arch में भी chemosensitive area present है, and the artery which is supplied to brain or head is called as what? ना carotid artery. तो artery which is supplied to the head is called as carotid artery. तो वहां पे भी chemosensitive area present है. ऐसा क्यों है? कोई बता पाएगा? कैरोटिड आर्टरी हेड को सप्लाई होता है, एंड हेड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? फैटिग हो जाएगा.
है कि नहीं? इसीलिए तुरंत फास्टर हो जाएगा ब्रीदिंग, ताकि ब्रेन कभी फैटिक ना हो। कोई दिक्कत है? कंप्लीट हो गया सबका? Now we are coming to the next and the last topic of this chapter. Regions of respiratory system. Respiratory disorders में हम लोग लास्ट में आ गए. Under that we'll come to the first asthma. First of all, asthma is a type of bacterial disease, viral disease, allergic disease. Which one? Allergic disease. And यहाँ पे allergen कौन कौन है? Who are the allergens? ना यहाँ पे allergen dust हो सकता है, pollen grain हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है और लो टेम्परेचर भी हो सकता है. इसीलिए आप लोग देखे होंगे बच्चों के केसेस में, जैसे ही सीजन चेंज होता है वैसे ही एलर्जिक सिम्टम और अस्थमा स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? डस्ट एरिया में वहां पे भी हम लोग जैसे होता है तो कंटिन्यूअसली स्नीजिंग स्टार्ट होता है एंड आस्थमेटिक ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाए. सो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन द अस्थमा? नॉर्मल ब्रीथिंग की डिफिकल्ट ब्रीथिंग? डिफिकल्ट ब्रीथिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स का जो जो ल्यूमेन है वो क्या होता है? नैरो हो जाता है. So narrowing of the lumen of bronchioles and because of what? Because of spasm. हम लोग याद किए, हम लोग पढ़े थे spasm. Involuntary muscle contraction, sudden muscle contraction is called as what? Na spasm. Involuntary sudden muscle contraction of the respiratory tract is called as spasm. The spasm of which muscle? Na muscles present in the bronchioles. उससे क्या होगा? ल्यूमेन क्या होगा? नैरो हो जाएगा. एंड क्योंकि ये इन्फ्लेमेटेड होगा तो म्यूकस भी ज्यादा सिक्रेट होगा, डिपॉजिट हो जाएगा. तो एक तो म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, दूसरा नैरो हो जाता है उसका ल्यूमेन, तो ब्रीदिंग क्या होगा? डिफिकल्ट होता है. एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग की वजह से हाई टेंशन हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, ल्यूमेन नैरो हो रहा है, तो विजिंग साउंड निकलेगा. रिमेंबर विजिंग, a typical word related to what? अस्थमा. विजिंग दे दिया, डिफिकल्ट ब्रीथिंग दे दिया, स्पैजम दे दिया, तो कुछ सोचना नहीं है क्या है अस्थमा. राइट? स्पैजम that is involuntary and sudden contraction of smooth muscles of wall of bronchioles, causing narrowing of respiratory tract. सिम्टम्स क्या है? coughing, wheezing, that is sound, produced during
breathing. Coughing, wheezing, difficult breathing, inflammation, means mucus deposition. ये सब कॉमन चीजें, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अस्थमा रिलेटेड जो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग और डिटेल्स में कॉमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th चैप्टर में आप लोग आ जाएगा वो चैप्टर, वहां पे अस्थमा के बारे में डिटेल्स आ जाएगा क्योंकि एलर्जी वहां पे पूरा डिस्कशन किया जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर 2, एम्फाइसेमा। Emphysema, it is a chronic disorder due to cigarette smoking. सिगरेट स्मोकिंग करने से एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 2 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, महीने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम होगा। That is why it is the word what? Chronic. Slowly, steadily, continuously. And ये बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है। होता क्या है देख लेते हैं। एल्वियोली सरफेस डैमेज हो जाता है। इलास्टिसिटी of wall of bronchioles and alveoli decreased. अगर ऐसा हुआ तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? तो डिक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज and increased rate of breathing. इसलिए स्मोकर्स के केस में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर है। तो आप ये बोलिए कि नॉर्मल पर्सन एंड स्मोकर्स में अगर हम लोग कंपेयर करें, आफ्टर द नॉर्मल एक्सपीरिएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, आफ्टर द नॉर्मल एक्सपीरिएशन among the normal and smokers, FRC किस में ज्यादा होगा? FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पढ़े थे ना? तो FRC is the amount of air present in the lungs after the normal expiration. So FRC किस में ज्यादा होगा, एक स्मोकर्स में या एक नॉर्मल में? इसका मतलब आप लोग समझने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इफेक्टिव ब्रीदिंग होगा या इनइफेक्टिव ब्रीदिंग होगा? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम होगा तो इलास्टिसिटी डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? अरे भाई, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, नॉर्मल होता है, तो ज्यादा स्क्वीज होता। यहाँ पे तो इलास्टिसिटी डिक्रीज है, अगर डिक्रीज है तो कम स्क्वीज होगा। तो ज्यादा एयर प्रेजेंट होगा लंग्स में कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो एफआरसी वॉल्यूम किसमें इंक्रीज रहेगा, नॉर्मल या स्मोकर्स? हाँ, आप लोग समझने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हाइपोथेटिकल सोचेंगे तो आप बता पाएंगे क्वेश्चन इस चैप्टर का? नहीं होगा। लंग्स विच filled with air or lungs with less air? In case of smokers, filled with air
and that is the literal meaning of emphysema. Emphysema का मतलब ही है full of air. So more air left in lungs, so called full of air, emphysema. मतलब inflated lungs या collapsed lungs? हाँ, inflated lungs. अब आप लोग धीरे धीरे समझ में. Number 3. Occupational respiratory disorder. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. देखिए बहुत सारा जो लोग हैं डिफरेंट अलग अलग ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, राइट? ऑक्यूपेशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स. सपोज टू बी अ पर्सन इज वर्किंग इन ए ग्लास फैक्ट्री. ए पर्सन इज वर्किंग इन व्हाट ना स्टोन क्रैकर और स्टोन क्रशर मशीन के आसपास काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, डस्टी एरिया में काम करते हैं, तो उनको अलग टाइप का बीमारी होगा कि नहीं? ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिसऑर्डर रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन. जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस, ये दोनों कॉमन एग्जांपल है. एस्बेस्टोसिस जैसे कि जहां पे आप लोग देखे होंगे, ये जो बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, छोटा छोटा चिप्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो रोड के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट होता है कि नहीं? एस्बेस्टस डस्ट कॉल्ड एज एस्बेस्टोसिस. एंड हम लोग जो ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पे ग्लास में क्या होता है ना, सिलिका, सिलिकोसिस. समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है. सो राइट प्लीज. ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू, ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू due to continuous exposure to harmful substance, gases, dust, fume, FUMES, etc. Harmful exposure to gases, dust, fumes, etc. in the environment where a person is working. In an environment where a person is working. तीन एग्जाम्पल हम देते हैं, दो एग्जाम्पल दो एनसीईआरटी बेस्ड है. एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, pneumoconius. It is the continuous exposure to asbestos, जैसे कि हम सीमेंट फैक्ट्री बोल सकते हैं, क्रशर फैक्ट्री, क्रशिंग मशीन और स्टोन क्रशर. It is the continuous exposure to silica, glass factory,
is the continuous exposure to, that is soil particle or dust particle. जैसे कि माइंस एरिया में काम करते हैं या तो एग्रीकल्चर लैंड में जो काम करते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक में आते हैं। कंप्लीट हो गया? एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, निमोकोनियोसिस कंप्लीट। ये था नंबर 3 ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। I'm coming to the next page. Finished it? Yes. Number 4. Atelectasis. Atelectasis means collapsing of lungs alveoli. Collapsing of lungs alveoli is called as atelectasis. And इसका mainly दो cause है. Number 1, obstruction of bronchi and bronchioles. And second is non-secretion or inactivation of lecithin secreting cell. ये दो कॉज है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझिए। Suppose to be this is trachea, this is primary bronchi, this is secondary bronchi, this is tertiary bronchi, then different type of bronchioles and ultimately what? An alveolar duct with alveolar sac and alveoli, right? आप अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारा ब्रांचेस होगा, है कि नहीं? Now supposed to be this part has been blocked. Obstruction का मतलब क्या है ना? Blockage. A part of the respiratory tree has been blocked. तो वहां से आगे जितना ब्रांच है वहां पे और एयर रीच करेगा क्या? तो ये कोलैप्स हो जाएगा कि नहीं? ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन जितना नीचे होगा उतना कम एरिया अफेक्टेड होगा, है कि नहीं? अगर ये ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा एरिया अफेक्टेड होगा। अब यहाँ पे और भी दिमाग लगाइए, अगर एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बीइंग कोलैप्स्ड मोर, अगर एल्वियोली ज्यादा कोलैप्स्ड हो गया तो बचा हुआ एल्वियोली के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि नहीं? सरफेस एरिया डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया कि नॉर्मल हुआ? रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा? देखो फिजिक्स का फॉर्मूला हर जगह काम कर रहा है। रेस्पिरेशन को लाइटली मत लीजिए। अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। डाइजेशन सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया रेस्पिरेशन, इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा सर्कुलेशन, उससे जो और ज्यादा होगा एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगा। हम लोगों का भी इवोल्यूशन चल रहा है, समझ में आया कि नहीं? नंबर 2 इज नॉन सिक्रेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ द लेसिथिन सिक्रेटिंग सेल। याद करिए, आप लोग पढ़े थे कि लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड ऑयली सिक्रेटेड फ्रॉम द टाइप 2 alveolar cell। याद आया? सर्फेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, काम क्या था? रिड्यूसिंग द alveolar air and alveolar fluid pressure, surface tension को डिक्रीज करता था and preventing what ना collapsing of the lungs alveoli। अगर आपका surface active agent और lecithin secrete कम हो गया because of the inactivation or because of the non secretion,
तो lungs alveoli collapse हो जाएगा कि नहीं? And that collapsing of the lungs alveoli is called as what? Atelectasis. Clear है? So with this we have completed this chapter.